Okay, Rukman, let's start your HR snap for central government PSU, and you are from large background. We'll start with your introduction. My name is Rukman Patidar. I am from Mandsaur district of Madhya Pradesh, which is also famous for opium production, and also city of Lord Pashupatinath. I did my early education from my native place itself. Then I moved indoor for higher studies. BA LLB honors from Devi Ahilya Vishwavidyalaya, formerly known as University of Indore in 2021. Since then, I am preparing for various competitive examinations. My hobbies include dancing and cooking food. Okay. Okay, Rukman, you said your district is famous for opium production. Yes, sir. Do you know that opium is governed by some law? Yes, sir. It is governed by NDPS Act, and its production is governed under Ministry of Finance, Government of India under license procedure. It is true alkylite factory in India. One is in Neemuch, MP, and second is in Ghazipur, UP. It is ground in 3 states, namely MP, Rajasthan, and UP. Okay. Okay, Rukman, what is CAT? CAT. Pardon, sir? CAT क्या है? Common admission test. Common admission test. Yes, Central Administrative Tribunal. Okay, have you heard sorry, about sir. the CAT? Yes, sir. Central Administrative Tribunal. It is a constitutional body under Article number 323 of Indian Constitution, and it is governed by 1985 Act. So is it deal with the criminal offense, or it is deal with some administrative one? Administrative matter and related to civil personals. Administrative matter related to civil services and defined authorities under this right. Okay. Do you know CCS rule? Central service rules, sir, I am exactly not aware, but these rules deals with central government employees and their services. In central government, nowadays is a provision of appointing arbitrator in case of any dispute of with the private authorities or private contractor. So, what is that? Who is that arbitrator, and what should be the qualification of that arbitrator? Sir, in which regard you are asking about arbitrator? I'm asking about the contractual conflict between government and the private contract. No, sir, I am not aware. So do you know what is the main work of your firm for which you have been applied for? Sir, I am not able to hear you. Please repeat. I am asking what is the main work of that firm for which you have applied? Yes, sir. The firm deal with printing and minting of government work like currency notes, bank note, security papers with security certificates, currency, judicial stamps, and stationery materials, and visa and passport documents, and other documents for government purpose. Okay, so then what will be your role? What do you think? What will be your role in that company? Sir, mainly the role of assistant legal manager will be compliance with the labor laws in that organization. Labor law. Yes. Okay. Labor law is governed by the state or it is governed by the center? It is in concurrent list governed by both governments. Center as well as state. Yes, sir. Okay. So in case of laborer,
minimum fair wages जो भी होता है, that all we use to employ. So for that we have to follow the center rules, or we have to follow the state rule in which we have to apply. Sir, the recent law regarding minimum wages, the Code of Wages 2019, which the central government decide the minimum floor wage. After that, the state government can decide minimum wage, but the state government cannot decide the wage below which the central government has decided. Okay. अच्छा, how many currency we can क्या बोलते हैं print in a year? I am not aware. Government authorized the central bank, and according to that, we print currency. Is there any rule or law regarding that? We have to deposit kind of sorry, that gold to the bank so that gold value currency can be printed. Sir, exactly, I do not know about the law, but yes, there is certain law regarding the central government has to keep security in the central bank, then the central government prints currency. Achha, if there is some dispute between the government and the government employee, so in which court they will go? Sir, they will go in Central Administrative Tribunal if the they matter is don't civil. Satisfied with the CAT decision, then they can go with High Court and Supreme Court. Supreme Court. They will go to Supreme Court. Not High Court. No, sir. After CAT, they have to go Supreme Court. They have to go to Supreme Court. That means CAT is equivalent to High Court. Yes, sir. In many matters, it is related to High Court. Because the judges they sit in Central Administrative Tribunal are equivalent to judges of High Court, and they have qualification same as judges of High Court. So, by which article we have added the fundamental duties in our Article number 51A in 1976 by 42nd Amendment. I think the fundamental duties are contradictory to the fundamental rights. No, sir, they are not contradictory, but they are fundamental in governance of our country. If any person has rights, and it should follow also some rules and regulation of the state. So if we have right, and we must have duty, so that other person can enjoy their right if we follow some rules of state. Okay, Rukman, now let me give you a feedback. Okay, na? Yes, sir. So you have applied for the central government, so you must be aware of the functioning of the CAT. Okay, na? Okay, sir. So CAT, and I think after CAT, people can go to High Court or Supreme Court. You know, Sir, I will read this act. the process. Yes. Okay, na? If they don't satisfied with the CAT, so they can. Sir, I will read. And you must know about the arbitrator, because this is now private arbitrator is being appointed for any. Okay, it is these are arbitrators are appointed by the High Court of Supreme Court of India. Okay, sir. So you must know how the arbitrator be appointed in India. Okay, na? And what it had to be the qualification of these arbitrators. सर मैंने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट तो पढ़ा है, पर उसमें कहीं गवर्नमेंट का वो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आपने अभी बताया. So you can check from the net, because now Yes, if there is a dispute between the contractor and the government, government appoint the arbitrator.
ओपीएम का आपके बताया था, आपने अपना इंट्रोडक्शन उसी डायरेक्शन में दिया है कि पीपल इंटरव्यू विल आस्क अबाउट द ओपीएम, ठीक है ना। ओपीएम का क्या यूज होता है, ये इसको बात हाँ कर सकते हैं अदर देन लॉ जो इस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। यस सर, मेडिसिन वगैरह में इसका क्या यूज है वो? आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हॉबी में कुकिंग आपका हॉबी है तो यस सर, तो उसमें क्या क्वेश्चन तैयार करना है? कुकिंग में आप क्वेश्चन हो सकते हैं कि इंडिया के जो फेमस शेफ हैं तो जिनके नाम हैं, संजीव हाँ कपूर हो गया और हाँ, संजीव कपूर। अगर नाम है, ठीक है ना। इनको हो सकता है को आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको 10 लोगों का खाना बनाना है तो व्हाट विल बी योर प्लानिंग क्राइटेरिया टू मेक द फूड फॉर 10 पीपल, ठीक है। ऐसे हो सकता है। डांसिंग में आपसे महाराष्ट्र का कोई डांस वो है, कोई लावणी, हाँ, इसके फेमस बारे डांसेस में, ऑफ इंडिया। हाँ उसके बारे में पूछ सकते हैं। जो अदर स्टेट्स के डांस हैं, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये कहाँ से किससे रिलेटेड है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा बी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस ही कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक सेंटेंस को जो अगर आप फ्लो में ज्यादा बोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। ओके सर। बीइंग ए लॉ प्रोफेशनल तो यू हैव टू बी द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सेंटेंस एंड स्पीक दैट सेंटेंस इन फ्लो, ठीक है ना। यस सर। तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज यू आर गुड एनफ, ठीक है ना। सर पर चलिए। इसका सिलेबस, एक क्वेश्चन पूछना है सर। सिलेबस बहुत वास्ट है, 5 ईयर कोर्स। सर एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज आती नहीं है, सिर्फ 2 पोस्ट के लिए है वैकेंसी, हाँ असिस्टेंट लीगल मैनेजर की। तो अब मैं बताता हूँ, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। वट एवर यू हैव रीड अबाउट, ठीक है ना, यस सर। उसको पढ़िए। अगर इफ दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम अदर देन दिस तो यू कैन से सर आई रिक्वेस्ट टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सब्जेक्ट बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। और सर एक क्वेश्चन गैप है 2 साल का। 2021 में ग्रेजुएशन हुआ था और अभी वो है, इंटरव्यू है, उससे गैप बीच में कोई गैप एग्जाम नहीं निकला। गैप का कुछ नहीं है। यू कैन से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम एज वेल एज डूइंग माय क्या बोलते हैं अपना स्टडी। उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है तो है, उसमें आप छुपा नहीं सकते उसको, यू कांट हाइड इट। और सर वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपने बाहर से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया है, तो मेरे को जाना नहीं है, जुडिशरी में भी नहीं जाना है और एडवोकेसी में भी नहीं जाना है, तो इसका क्या आंसर बनाऊंगी मैं? तो आप बोलते ना कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्राइवेट प्रैक्टिस, तो आई डिसाइडेड टू गो इन द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, उसमें जो रियल है वो बोलना है आपको, उसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि वो कहेंगे कि आप अगर गवर्नमेंट वहां पे जाते आपको प्रैक्टिस होती, सर यू आर राइट, आई विल हैव बीन अ प्रैक्टिस बट if I do the practice for that I have to be in the क्या बोलते हैं in particular field now, ठीक है ना। लेकिन आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट, ठीक है। यस सर। चलिए, तो आप उसको अपने क्लियर माइंड में बोलिए कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है ना। बस सर मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। ओके सर। चलिए, गुड लक रुकमन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।